Hello and welcome, my dear students. How are your studies going on? As you all know that we are now stuck in our homes and it is very difficult for me to know or evaluate whether you people are studying or not. I hope you people will cooperate with me and study the chapters properly. So, in our previous classes, we have discussed about types of common infectious diseases of humans. I hope those lectures are clear to you people. Today we are going to start with a new topic, that is immunity, as you can see on your screen. So let us start. So first of all, what is immunity? Now you can see a definition of immunity in your screen. But before explaining what is immunity and all, let us study a example. Okay? Or let us see an example. Suppose you have a very beautiful house, and in order to protect your house you have arranged a security guard. Okay, now what is the function or what is the role of the security guard? The role of the security guard is to protect your house from any kind of thief. Okay, so suppose one day a thief visits your house. Now what will this security guard do? This security guard will go and arrest the thief. Okay, and it will protect your house. So it is protecting your house from thief. Similar to this, our immune system or immunity protects our body from the harmful effects of the viruses or the bacteria or other kind of disease causing organisms. Okay, so let us study the definition for immunity. Immunity or disease resistance is the ability of an organism to resist the development of a disease, and the study of immunity is called immunology. Now before proceeding to further part of this chapter, let us study two definitions. One is antigen and another is antibody. What is antigen? Antigen is any foreign substance which is unknown to the body and can harm the body. If any foreign substance can cause harm to the body, that foreign substance will be known as antigen. It can be anything. It can be microorganisms, it can be different chemicals as well. And what is antibodies? Antibodies are the protective chemicals produced against the antigens. It is produced by the body against the antigen. So antigens are the foreign substances, and foreign substances के against में जो हमारे body में जो substance या chemical produce होता है उसे हम बोलते हैं antibodies. These two terms should be very clear in your mind. So in this example, the security guard is the antibody. Okay, and antigen is the thief. Is it clear? So antigen are the foreign substances entering in our body, and antibodies are those chemicals or protective chemicals which protect our body from any kind of harmful antigens. Now let us see the structure of antibodies. Antibodies are Y-shaped structure. Okay, it is Y-shaped structure. Let us see a picture. So this is a picture showing the structure of antibody. Now you can see from this in this picture that it is a Y-shaped structure. It is a Y-shaped structure. Okay, now it consists of two heavy chains and two light chains. Okay, you can see in this picture, these are light chain. Okay, both of them are light chain and these are heavy chains. Okay, so it consists of two light chain and two heavy chain. So therefore it is represented as H2L2. Is it clear? Next, it consists of two antigen binding sites. So these are the sites where the antigen comes and bind. Antigen आके यहाँ पे ही bind करता है. ठीक है? Now let us see the structure in detail. So you can see the antibodies, they consist of 4 polypeptide chain, of 2 of which are light and other 2 are heavy chains. Okay, the light chain and heavy chain are joined together by disulfide bonds. So they are joined together by disulfide bonds. So these are the disulfide bonds you can see in the picture, and it is represented as H2L2. Just मैंने जो आपको बोला. Okay, it is represented H2. H stands for
heavy chain, and L stands for light chain. So it consists of 2 heavy chain and 2 light chain. And some of the examples of antibodies are IgA, IgM, IgE, IgG. What does IG stands for? IG stands for immunoglobulins. Antibody को और एक नाम से जाना जाता है, that is immunoglobulin. Note it down in your copy. Next, this is very important for your examination point of view. Now let us see the types of immunity. As you can see in your screen, there are 2 types of immunity. One is innate immunity and another is acquired immunity. Innate immunity is that type of immunity which is present from your birth. आपके जन्म से ही आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी. एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी इज दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच ए पर्सन एक्वायर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. वो अपने लाइफ टाइम में जो इम्यूनिटी एक्वायर करता है एक पर्सन, उसे ही हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमें जन्म से हमारे पास नहीं होता है मगर हम उसे एक्वायर करते हैं, हम उसे अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, ठीक है, कमाते हैं, यू कैन से. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. वन इज इनेट एंड another one is acquired. Now what are the examples of innate and acquired? We will study the types of innate immunity, types of acquired immunity in more detail. So innate immunity is the type of immunity which is present from birth. Okay, जो मैंने आपको बोला है, it is present from birth and it is not pathogen specific. ये टर्म का मीनिंग क्या है? And it is very important. Not pathogen specific मतलब कोई पर्टिकुलर पैथोजन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में ये इम्यूनिटी काम नहीं करता है. ये इम्यूनिटी इन जनरल काम करता है, इन जनरल वो काम करता है. ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये बीमारी हुआ तो ये बीमारी के अगेंस्ट में मेरे बॉडी में कुछ एंटीबॉडी बना या कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना, ऐसा कुछ नहीं है. ये इन जनरल काम करता है. ओके, सो इट इज़ नॉट पैथोजन स्पेसिफिक, रिमेंबर दिस थिंग. एंड अनदर इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. Acquired immunity, it is not present at the time of birth and it is pathogen specific. मतलब आपके लाइफ टाइम में कुछ आपके आप बीमारी से आप गुजरे हो तो उसके अगेंस्ट में आपके बॉडी में ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी बनता है. फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, व्हेन यू सफ़र फ्रॉम चिकन पॉक्स एट दैट टाइम एंटीबॉडीज गेट डेवलप्ड. ओके, सो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनता है फॉर चिकन पॉक्स. ये आपके बॉडी में सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं होता है. इट इज़ एक्वायर्ड बाय यू इन योर लाइफ टाइम. नाउ लेट अस सी इन डिटेल अबाउट innate and acquired immunity. First let us see about innate immunity. So हमको पता है innate immunity, it is present at the time of birth and it is provided by different types of barriers. बहुत सारे बैरियर्स काम करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इनेट इम्यूनिटी विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इन द बॉडी. ओके, सो बहुत सारे बैरियर्स काम करते हैं आपका इनेट इम्यूनिटी में, ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोज टाइप ऑफ बैरियर्स. दोज टाइप्स ऑफ बैरियर्स आर, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स. क्या क्या? One is physical barrier, another is physiological barrier, cellular barrier and cytokine barrier. Now let us see about those barriers one by one. Physical barrier, नाम से ही पता चलता है कुछ something will be physical. Okay, so physics से related कुछ है. So क्या क्या physical barrier में include होता है? It includes skin and inner lining of respiratory, gastrointestinal and urinary tract. यहाँ पे urinary tract कट गया है, it is written in your notes, urinary tract. Okay, so the lining, the skin. Okay, तो skin क्या करता है? It prevents entry of different types of microorganisms in our body. It acts as a protective layer. Next, lining of respiratory tract, gastrointestinal tract and urinogenital tract. वहाँ पे क्या होता है कि there is a mucus lining in our respiratory tract, in our gastrointestinal tract, मतलब जो हमारे alimentary canal है वहाँ पे एक आपका protective lining होता है of mucus layer. It prevents the entry of any kind of microbes in our body. Now let us see the physiological barriers. Physiological barriers includes the acid in our stomach. We know that our stomach consists of an acid known as hydrochloric acid. Now you have studied in your class 10 as well that what is the function of hydrochloric acid. It kills any kinds of microbes present in our food. हम जब खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा microbes हो सकता है, so that microbes may enter in our body and may cause harm.
Okay, but the acid in our stomach, because of its acidity, it kills the bacteria or harmful bacteria or microorganisms. Next, saliva in our mouth. Our mouth consists of saliva, and this saliva consists of antibacterial enzymes in it, as well as tears. Tears जो हमारे tear gland से secrete होता है, it also consists of antibacterial enzymes. So these are known as the first line of defense in our body. Next type of innate immunity barriers includes cellular barriers. नाम से ही पता चल रहा है कुछ cells होगा. We have already studied about those cells in our class 11, so I am not going to discuss in detail. So examples of cellular barrier include neutrophil, monocytes, natural killer cells, macrophages. Now one question for you people: how does these cells, or by what process the cells अटैक द एंटीजन? उस प्रोसेस का नाम क्या है वो मैंने आपको क्लास 11 में बताया है, एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट, cytokine barrier. What are cytokines? Cytokines, you can say certain chemicals, okay, which is secreted by some affected cells. जो सेल affected हो गया है वो सेल कुछ केमिकल रिलीज करता है और उसी केमिकल का नाम है cytokine. And one of the most common example of cytokine is interferon. Interferon are secreted by virus infected cells and it protects the non infected cell from further viral infection. Interferons कहाँ से रिलीज करता है? From virus infected cell, and it protects any non infected cells from further viral infection. So आपको यहाँ से क्या याद करना है? साइटोकाइन का example, that is interferons. Now this is all about innate immunity. So innate immunity में क्या मिला? There are 4 types of barriers which includes skin, which includes physical barriers, physiological barriers, cellular barriers and cytokine barriers. You have to remember the name of these 4 kinds of barriers and their examples as well. Now let us see about acquired immunity. As I have told you already that acquired immunity is that type of immunity which is being acquired by a person during his or her lifetime, जो हम अपने lifetime में एक्वायर करते हैं. तो जब हमारे बॉडी में हम कोई भी आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ से या किसी भी फॉरेन पार्टिकल से जब फर्स्ट टाइम हम एनकाउंटर करते हैं, एट दैट टाइम हमारे बॉडी में जो रेस्पॉन्स जनरेट होता है दैट इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स. प्राइमरी मतलब फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स जो जनरेट होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, एंड इट इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी. उसका इतना पावर नहीं होता, ठीक है. नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला कि आप अपने हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गुड सिक्योरिटी गार्ड अरेंज किया आपने, एंड जब थीफ आया वो सिक्योरिटी गार्ड जाके थीफ को पकड़ा. नाउ जब वो सिक्योरिटी गार्ड जाके थीफ को जब वो पकड़ा, एट दैट टाइम उसका जो वे ऑफ कैचिंग द थीफ विल बी लिटिल बिट स्लो, उसको इतना पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर सेकेंड टाइम फिर से कोई थीफ आता है हाउस को अटैक करने के लिए, एट दैट टाइम सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? वो अपने पास और भी वेपन्स रखेगा, ही विल बी मोर अलर्ट. ओके, सो सिमिलर थिंग्स हैपन्स इन आवर बॉडी. जब फर्स्ट टाइम कोई रेस्पॉन्स होता है एट दैट टाइम जो उसे बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, एंड इट इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी. रिमेंबर दिस वर्ड, इट इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी. एंड सेकेंड टाइम जब वही सेम पैथोजन एनकाउंटर अगेन, एट दैट टाइम the type of response generated in our body is very high and it is known as secondary immune response. Secondary immune response कैसे generate होता है? It is due to the memory of the first encounter of pathogen. जब first आप pathogen से encounter हो गया फिर आपके body में secondary immune response generate होगा. Okay, next question. There is a question, how are responses carried our body? ये जो primary response, secondary response, ये responses कैसे होता है हमारे body में? What is the funda behind this responses carried in our body? It is mainly carried by a type of cells or type of lymphocytes. You can say there are 2 types of lymphocytes we have already studied in our previous classes, that is B lymphocytes and T lymphocytes. Do you remember the function of B lymphocytes and T lymphocytes? If not, let me revise it to you for you people again. See, B lymphocytes, they produce antibodies. They are antibodies producing cells in our body, and T lymphocytes, they help the B cells to produce antibodies. So T lymphocytes are also known as dash cells. So this dash needs to be filled out by you people and you have to answer this in the comment section below कि T lymphocytes को और एक क्या नाम से जाना जाता है.
Okay, so B lymphocytes, they mainly produce antibodies and T lymphocytes help the B lymphocytes to produce the antibodies. मैंने आपको hint भी बता दिया है, ठीक है. Now next is, what are the types of acquired immunity? We have seen the types of innate immunity. Now let us see the types of acquired immunity. Acquired immunity are of two types. One is humoral and another is cell mediated immunity, as you can see in your screen. Now humoral immunity क्या को बोलता है? Humoral immunity is the antibody mediated immunity. मतलब जैसे कि B cells जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके हमारे बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है, उस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को हम बोलेंगे humoral immunity. एंड T cells जो B cells को हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मतलब जो जहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व है, लाइक T cells. Okay, now let us see another important topic, or you can say another type of immunity, that is active and passive immunity. What is the basic difference between active and passive immunity? See, active immunity में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज जनरेट होता है. एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज जनरेट होता है, whereas in case of passive immunity antibodies are not generated in our body, whereas antibodies are supplied from the external source. एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हम एंटीबॉडीज देते हैं. So this is the basic difference between active and passive immunity. Are you getting my point? Active immunity is that type of immunity in which antibodies are generated by our body itself. हमारे बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडी जनरेट होता है. Whereas in case of passive immunity, antibodies are not generated in our body. Instead, they are supplied from outer sources. So जैसे कि मैंने आपको बोला, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन. जब एंटीजन आता है तब अंदर ही एंटीबॉडीज जनरेट होता है, एंड दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज स्लो. Whereas in passive immunity, antibodies are injected into the host body and it is a fast process. Let us see the different types of or examples of active and passive immunity. First हम देखते हैं natural active immunity. Natural active immunity मतलब a person who has suffered from a disease once do not tend to get it again. For example, ऐसा माना जाता है कि चिकन पॉक्स, आपको एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया तो दूसरी बार आपको नहीं होता है. क्यों? What is the reason? The reason is antibodies. जब चिकन पॉक्स हुआ, at that time antibodies will be generated in your body against the antigen, and that antibodies will protect your body. So this type of immunity is known as natural active immunity. Is it clear? नेक्स्ट, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है समथिंग इट इज़ नॉट नेचुरल. यहाँ पे क्या होता है, वैक्सीन देना पड़ता है. वैक्सीनेशन ऑफ ए स्मॉलर डोज ऑफ हार्मलेस वर्जन ऑफ ए डिजीज. हम किसी भी डिजीज का हार्मलेस वर्जन देते हैं टू दैट पर्सन. ओके, जो एट प्रेजेंट हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है फॉर कोविड-19, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो डिजीज कॉजिंग वायरस है, दैट इज कोरोना वायरस, उस वायरस दैट इज उसे हम बोल सकते हैं पैथोजन, उसी पैथोजन का आपका स्मॉलर डोज आपको वैक्सीन के थ्रू दिया जाता है. उसी के अगेंस्ट में हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो तो दोज एंटीबॉडीज़ कैन गो एंड अटैक द वायरस. इसी के थ्रू ही हमारे वैक्सीन दिए जाते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक पोलियो, टिटेनस, एक्सेट्रा. नाउ वी विल सी वैक्सीनेशन, द टॉपिक वैक्सीनेशन इन आवर कमिंग क्लास इन मोर डिटेल. Okay, now I am giving you a brief idea about vaccination now. So vaccination में क्या होता है कि artificially वो पैथोजन दिया जाता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, एंड ऑर्गेनिज्म के बॉडी में देने के बाद एंटीबॉडीज जनरेट होता है. एंटीबॉडीज ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही जनरेट होता है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. Next is natural passive immunity. I have told you that in passive immunity, antibodies are not generated in the person's body. Instead, they are being supplied from outer external environment. Now, one example of natural passive immunity is antibodies which are received from mother's milk. So, when a baby is newborn, at that time, it is recommended that the mother should feed her baby. Why? What is the reason? Because at that time, the milk consists of high amount of antibodies in it, and those antibodies are against several diseases,
and that antibody and protein rich milk is known as colostrum. You will study about this in your chapter 3, that is human reproduction. Next, the last type of passive immunity is artificial passive immunity. यहाँ पे क्या होता है कि antibodies, artificially we supplied antibodies through injection into the person. Artificially हम क्या दे रहे हैं? Antibodies दे रहे हैं. This is done during your dog bite. जब आपको डॉग काट लेता है, at that time आपके बॉडी में उतना टाइम नहीं रहता कि एंटीबॉडीज़ जनरेट करो. एट दैट टाइम कुछ इंजेक्शन दिया जाता है. वाई दैट इंजेक्शन इज गिवन? सो दैट उस इंजेक्शन में एंटीबॉडीज रहता है अगेंस्ट द पैथोजन. सो दोज पैथोजन विल गो एंड अटैक द those antibodies will go and attack the pathogen. So such type of immunity is known as artificial passive immunity, in which antibodies are being given to the patient through injection. ये हमारे एट प्रेजेंट कोविड-19 सिचुएशन में जो प्लाज्मा थेरापी आपने सुना होगा, एट दैट टाइम ऑल्सो दिस आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का कंसेप्ट इज बीइंग अप्लाइड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. व्हाट वी हैव स्टडीड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन अबाउट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज इनेट एंड एक्वायर्ड. इनेट इम्यूनिटी में हमने देखा उसका टाइप्स, मतलब कि उसमें क्या क्या बैरियर्स इन्वॉल्व होता है. एंड देन वी हैव सीन अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड its types. I hope the video is clear to you people, and the task for you is you have to write down the difference between innate and acquired immunity, as well as the difference between active and passive immunity. This is your assignment from today's lecture. So that's all for today. Thank you.